abbreviate Sankshipt Karna, the writer decided to abbreviate the lengthy paragraph. Lekhak ne lambe paragraph ko Sankshipt Karna तय किया. 2. Abridge Sankshipt Karna. The editor abridged the novel for younger readers. Sampadak ne chote patako ke liye upanyas ko Sankshipt kiya. 3. Abet Sahayata Karna. The criminal was accused of abetting the robbery. Apradhi par dakati mein sahayata karne ka arop tha. 4. Abort Vifal Karna. The mission was aborted due to bad weather. Kharab mausam ke karan mission ko vifal kiya gaya. 5. Abate Kam Karna. The medication helped to abate the pain. Davane darad ko kam karne mein madad ki. The idea of harming animals was abhorrent to her. Pashuon ko nuksan pahunchane ka vichar use घृणित laga. Abscond, Farar hona. The thief tried to abscond with the money. Chor paise lekar farar hone ki koshish kar raha tha. 8. Abecedian Shuruati. The course is designed for Abecedarian learners. Ye patyakram Shuruati shikshathiyon ke liye banaya gaya hai. Aghast. The villagers were aghast at the news of the fire. Gaon wale aag ki khabar sunkar bhochakka reh gaye. 10. Admirable. The doctor's dedication to patients is admirable. Doctor ki marizo ke prati nishtha prashansani hai. 11. Abundant Prachur. The forest is rich with abundant wildlife. Jungle mein prachur vanyajeev hai. 12. Accord. The leaders signed an accord to end the conflict. Netaon ne sangarsh samapt karne ke liye ek sahmati par hastaksha kiye. Accrue karna. Interest will accrue on the savings over time. Bachat par samay ke saath byaj sanchit hoga. 14. Approve. The manager approved the proposal for expansion. Prabandhak ne vistar ke prastav ko manjuri di. Surplus. Adhishesh. The farmer sold the surplus grain in the market. Kisan ne bajar mein adhishesh anaz becha. 16. Acrimonious Katu. The debate turned acrimonious after an hour. Behse ek ghante baad katu ho gayi. Altruist. Paropakari. The altruist spent his wealth helping the needy. Paropakari ne apni sampatti zaruratmando ki madad mein lagayi. 18. The critic's acerbic review upset the artist. Alochak ki katu samiksha ne kalakar ko pareshan kar diya. 19. The company must adhere to safety regulations. Company ko suraksha niyamon ka palan karna chahiye. Amiable. The teacher's amiable nature made students comfortable. Shikshak ka milnasar swabhav chhatron ko aramdayak banata tha. Adamant. The judge was adamant in delivering a fair verdict. Nyayadhish nishpaksh nirnay dene mein drut hai. The court acquitted the accused due to lack of evidence. Sabuto ki kami ke karan adalat ne aropi ko bari kar diya. Adjudication. Nirnay. The dispute required legal adjudication to resolve. Vivad ko suljane ke liye kanuni nirnay ki avashyakta thi. 24. Abominate. The villagers abominate corruption in governance. Gaon wale shasan mein prashtachar se gruna karte hain. 25. Affiniband. The artist has a natural affinity for colors. Kalakar ka rango ke prati swabhavik sambandh hai. Admonish. The teacher admonished the student for being late. Shikshak ne chhatra ko der se aane par danta. 27. Adore. Playing with their pets. Bacche apne paltu janvaron ke saath khelna pyar karte hain. Affluent. The businessman lives in an affluent neighborhood. Vyavasayi ek samadh pados mein rehta hai. 29. Reprimand. The manager reprimanded the employee for negligence. Prabandhak ne karmachari ko laparvahi ke liye fatkara. 30. Audacious. The explorer made an audacious decision to climb the mountain. Anveshak ne pahad par chadne ka sahasi nirnay liya. 31. Agile. The gymnast performed with agile movements. Gymnast ne furtile andolno ke saath pradarshan kiya. Absurd. The idea of flying pigs sounds absurd. Udne wale suaro ka vichar betuka lagta hai. 33. The customs officer inspected the alien passport carefully. Seema Shulk Adhikari ne Videshi passport ko savdhani purvak jancha. 34. Agitate. The protesters tried to agitate the crowd.
प्रदर्शनकारियों ने भीड़ को उत्तेजित करने की कोशिश की। 35. स्फूर्ति. The old man was surprisingly spry for his age. वृद्ध व्यक्ति अपनी उम्र के लिए आश्चर्यजनक रूप से स्फूर्ति वाला था। 36. Alacritus. तत्पर. The assistant responded with an alacritous nod. सहायक ने तत्पर सिर हिलाकर जवाब दिया। Authentic. The historian verified the authentic documents. इतिहासकार ने प्रामाणिक दस्तावेजों को सत्यापित किया। 38. Ardent. उत्साही. The fans showed their ardent support for the team. प्रशंसकों ने टीम के लिए अपना उत्साही समर्थन दिखाया। 39. Alleviate. कम करना. The doctor prescribed medicine to alleviate the pain. डॉक्टर ने दर्द को कम करने के लिए दवा लिखी। Argue. The lawyers continued to argue in the courtroom. वकील अदालत कक्ष में तर्क करते रहे। Aloof. The cat remained aloof from the noisy guests. बिल्ली शोरगुल वाले मेहमानों से अलग थलग रही। 40D. Alteration. The tailor made an alteration to the dress. दर्जी ने पोशाक में परिवर्तन किया। 43. Melancholic. The music had a melancholic tone that touched hearts. संगीत में एक उदास स्वर था जो दिलों को छू गया। The instructions were ambiguous and confusing. निर्देश अस्पष्ट और भ्रमित करने वाले थे। 45. Abominable. The dictator's abominable acts shocked the world. तानाशाह के घृणास्पद कृत्यों ने दुनिया को चौंका दिया। Ameliorate. The reforms aim to ameliorate the living conditions. सुधारों का उद्देश्य जीवन की स्थिति को सुधारना है। 47. Amiable. मिलनसार. The shopkeeper's amiable nature attracted many customers. दुकानदार का मिलनसार स्वभाव कई ग्राहकों को आकर्षित करता था। 48. Ample. The garden received ample sunlight for the plants to grow. बगीचे को पौधों के बढ़ने के लिए प्रचुर धूप मिली। 49. Amend. संशोधन करना. The government plans to amend the current laws. सरकार वर्तमान कानूनों में संशोधन करने की योजना बना रही है। Apparent. The solution to the puzzle became apparent after some thought. थोड़ा विचार करने के बाद पहेली का समाधान स्पष्ट हो गया। Wayward. Avajakari. The horse showed a wayward behavior and refused to move. घोड़ा अवज्ञाकारी व्यवहार दिखा रहा था और हिलने से इनकार कर रहा था। The security guard remained watchful during the night. सुरक्षा गार्ड रात के दौरान चौकस रहा। 3. Wanton. The wanton destruction of the forest angered the villagers. जंगल की उच्छृंखल तबाही ने ग्रामीणों को नाराज कर दिया। Vulnerable. The old building was vulnerable to earthquakes. पुरानी इमारत भूकंप के लिए असुरक्षित थी। Frail. The old man was too frail to lift the heavy bag. वृद्ध व्यक्ति भारी बैग उठाने के लिए बहुत दुर्बल था। 6. Willful. The willful child refused to share the toys. जिद्दी बच्चा खिलौने साझा करने से इनकार कर रहा था। 7. Chary. The investor was chary about putting money into the new scheme. निवेशक नई योजना में पैसा लगाने के प्रति सावधान था। 8. Immoronic. The businessman's immoral practices were exposed by the media. व्यवसायी की अनैतिक प्रथाएं मीडिया द्वारा उजागर की गईं। Feeble. कमजोर. The patient's voice was too feeble to be heard. मरीज की आवाज सुनने के लिए बहुत कमजोर थी। Self-willed. The self-willed artist refused to change his design. हठी कलाकार ने अपना डिजाइन बदलने से इनकार कर दिया। The dog remained wary of strangers near the house. कुत्ता घर के पास अजनबियों से चौकन्ना रहा। Promiscuous. The king was known for his promiscuous lifestyle. राजा अपने व्यभिचारी जीवन शैली के लिए जाना जाता था। 13. Exhausted. The workers looked exhausted after a long day of labor. मजदूर एक लंबे दिन के परिश्रम के बाद थके हुए दिख रहे थे। 4. जिद्दी. The headstrong player refused to follow the coach's advice. जिद्दी खिलाड़ी ने कोच की सलाह मानने से इनकार कर दिया। Careful. The scientist was careful while handling the chemicals. वैज्ञानिक रसायनों को संभालते समय सावधान था। 16. Indecent. The guests' indecent comments upset everyone at the party.
अतिथि की अशोभनीय टिप्पणियों ने पार्टी में सभी को नाराज कर दिया. The injured bird looked helpless on the ground. घायल पक्षी जमीन पर लाचार दिख रहा था. 18. Stubborn. The stubborn mule refused to climb the hill. हठी खच्चर पहाड़ी पर चढ़ने से इनकार कर रहा था. 19. The climber remained cautious while crossing the narrow path. पर्वतारोही संकीर्ण रास्ता पार करते समय सावधान रहा. 20. Lustful, वासनापूर्ण. The villain in the story had lustful intentions towards the heroine. कहानी में खलनायक की नायिका के प्रति वासनापूर्ण इच्छाएं थी. Alert. The cat was alert to every sound in the room. बिल्ली कमरे की हर आवाज के प्रति सतर्क थी. 20. Incompetent. The incompetent worker failed to complete the assigned task. अयोगी कर्मचारी सौंपा गया कार्य पूरा करने में विफल रहा. The obstinate donkey refused to move forward. अडियल गधा आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था. 24. Aware. सजग. The teacher was aware of the student's difficulties. शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों से सजग था. The Tihive. The villain's lecherous behavior made everyone uncomfortable. खलनायक के कामुक व्यवहार ने सभी को असहज कर दिया. 26. Enervated. शक्तिहीन. The soldier felt enervated after the long battle. सैनिक लंबी लड़ाई के बाद शक्तिहीन महसूस कर रहा था. 7. Rebellious. The rebellious group refused to follow the new laws. विद्रोही समूह ने नए कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया. 28. Discreet. सावधान. The detective was discreet while questioning the suspect. जासूस संदिग्ध से पूछताछ करते समय सावधान था. 29. The emperor's licentious behavior caused unrest in the kingdom. सम्राट के अनैतिक व्यवहार ने राज्य में अशांति पैदा कर दी. 30. Powerless Nirbas felt powerless against the invading army. गांव वाले आक्रमणकारी सेना के खिलाफ निर्बल महसूस कर रहे थे. 30. Circumspect. सावधान. The leader was circumspect before making the final decision. नेता अंतिम निर्णय लेने से पहले सावधान था. 32. Lascivious. कामुक. The character in the play had a lascivious personality. नाटक में पात्र की कामुक प्रकृति थी. Recalcitrant. The recalcitrant student refused to follow the school rules. अवज्ञाकारी छात्र ने स्कूल के नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया. Mindful. The artist was mindful of every detail in the painting. कलाकार पेंटिंग में हर विवरण के प्रति सजग था. 35. Wicked. The wicked witch cursed the entire village. दुष्ट चुड़ैल ने पूरे गांव को श्राप दे दिया. 36. Flimsy. The chair broke due to its flimsy structure. कुर्सी अपनी कमजोर संरचना के कारण टूट गई. 37. Unruly. The unruly crowd caused chaos at the festival. अव्यवस्थित भीड़ ने त्योहार में अफरा-तफरी मचा दी. Debilitated injure. The patient was debilitated after a long illness. मरीज लंबी बीमारी के बाद कमजोर हो गया था. 39. Evil. The story's villain had an evil plan to destroy the city. कहानी के खलनायक की शहर को नष्ट करने की बुरी योजना थी. 40. Affluent. The affluent businessman donated generously to charity. धनाढ्य व्यवसायी ने उदारतापूर्वक दान दिया. 41. The clown's zany performance amused the children. जोकर का मजेदार प्रदर्शन बच्चों को खुश कर गया. 42. Absurd. The idea of flying pigs seemed absurd to everyone. उड़ने वाले सुअरों का विचार सभी को बेतुका लगा. 43. Infamous. The pirate was infamous for his brutal attacks on ships. समुद्री डाकू अपने जहाजों पर क्रूर हमलों के लिए कुख्यात था. 44. Vile. The movie's villain had a vile personality. फिल्म के खलनायक की घृणित व्यक्तित्व थी. 45. Luxurious. शानदार. The palace was filled with luxurious furniture. महल में शानदार फर्नीचर भरा हुआ था. The Psyches. The scientist had a crazy idea to travel through time. वैज्ञानिक के पास समय यात्रा करने का पागल विचार था. 4. The man's odd behavior puzzled everyone. व्यक्ति के अजीब व्यवहार ने सभी को चकित कर दिया. 48. Whimsical. The artist's whimsical paintings were admired by critics.
कलाकार की सनकी पेंटिंग्स की आलोचकों ने प्रशंसा की। 49. Witty. The comedian's witty remarks entertained the crowd. हास्य कलाकार की चतुर टिप्पणियों ने भीड़ का मनोरंजन किया। 50. Zealous. The activist was zealous in promoting environmental awareness. कार्यकर्ता पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में उत्साही था।